वक्फ कानून के विरोध के नाम पर सिलचर में पुलिसकर्मियों पर पथराव करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम नजमुल इस्लाम, बिदार लश्कर, रोहित अहमद, दिलबर हुसैन, रोहित हुसैन, आतिकुर रहमान और रियाजुल लश्कर बताया गया है। सिलचर के चमड़ा गोदाम के पास कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया था। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वक्फ कानून के विरोध के नाम पर सिलचर में पुलिसकर्मियों पर पथराव करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम नजमुल इस्लाम, बिदार लश्कर, रोहित अहमद, दिलबर हुसैन, रोहित हुसैन, आतिकुर रहमान और रियाजुल लश्कर है। सिलचर के चमड़ा गोदाम के पास कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया था। পৰহি যেটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, এটা বেআইনী এটা সমদল ওলাই আহিছিল, মহানগৰত ওলাই আহিছিল আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া টাউনৰ ভিতৰলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰে আৰু আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰাৰ সময়তে তাৰ উদ্দণ্ড কিছুমান যুৱকে আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি হিল নিক্ষেপ কৰিছিল আৰু সেই সংক্ৰান্তত আমি ইতিমধ্যে এটা মোকদ্দমা ৰুজু কৰিছো আৰু এই মোকদ্দমাটো ৰুজু কৰাৰ পাছত আমি জোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰো আৰু যোৱা নিশা আমি এটা গভীৰ নিশা আমি এটা অভিযান চলাইছিলো আৰু ইয়াৰ মূল যি অভিযুক্ত যিসকলে এই যি ওলাই অহা প্ৰদৰ্শনকাৰীসকলক তেওঁলোকে পৰিচিত কৰিছিলে আৰু এই ঘটনাত লৈ যিসকল মূল অভিযুক্ত তেওঁৰ 7জন ব্যক্তিক আমি ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰিছো